So what are the benefits of an IoT ecosystem for a business? IoT ecosystem बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि इंटरनेट को हम यूज कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स को यूज कर रहे हैं, बिग डेटा को स्टोर कर रहे हैं, फर्दर उसमें हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, बिग डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसमें हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और रियल टाइम डेटा निकाल रहे हैं जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो समवेयर वो बिजनेस में तो हेल्प करेगा। It is clear that IoT system is a complex system that relies on the interconnectivity of a multiple systems. So koi server system, devices, all system we are talking about here. So the important component we are talking about the interconnectivity between the multiple systems. What might not be clear is basically ecosystem कैसे आपको बिजनेस में वैल्यूज ऐड करेगा। सो बिजनेस में क्या वैल्यूज ऐड करेगा? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब कैसे न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी कि बिजनेस और अच्छा चले, उसका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो? सबसे पहले तो आईओटी कह रहा है, आईओटी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू गेन द कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन विद अ पुश टुवर्ड्स स्मार्ट बिल्डिंग, vehicle and industrial automation. There will be an opportunity to provide a new offerings that weren't needed before. So सबसे पहले तो हमने जो कल IoT की applications पढ़ी, right? So IoT applications we talked about the various smart city offerings. So IoT will provide कर रहा है. So IoT offerings will provide an entire new revenue stream for many businesses, right? Now the drivers efficiency we are talking about. IoT ecosystem जो whatever we have talked about, IoT ecosystem आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंपनीज को ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ IoT ऑटोमेशन है, मशीन लर्निंग है, somewhere we are talking about here the AI component, the machine learning. So automations प्रोवाइड कर रहा है, ऑटोमेशन प्रोसेसेस प्रोवाइड कर रहा है, तो एफिशिएंसी जो है बिजनेस की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एफिशिएंसी जो है बिजनेस की वो इंक्रीज हो रही है। सो IoT इकोसिस्टम अलाउ IoT ecosystem allow companies to simplify and automate the processes. अब जब automate हो जाएंगे processes तो efficiency बढ़ जाएगी business की, making them more efficient, which in turn makes the workforce more productive. जब efficiency बढ़ जाएगी तो production भी बढ़ जाएगी. With more streamlined and the automated processes, you can get more done. Work done will be faster with the fewer resources. Resource management हो जाएगा automation से, and less chance of a human error. जो human error था वो कम हो जाएगा। जब आप सारी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप एडवांटेज पढ़ते हो। Then new business models. IoT is being used to create the new business models for automation and new service offerings. New business models, again with the help of automations we are talking about. The way business are being operated is changing for the better with the inclusion of an IoT system. The various, with the help of a connectivity, with the help of a sharing, we can get the various automations which gives us the new business model according to a consumer interest. अब business में होता क्या है? Business में customer है और एक manufacturing है। अब customer का interest क्या है? उसकी जो डेटा है वो कैसे आप जनरेट कर रहे हो? रियल टाइम एनालिटिक्स से जनरेट कर रहे हो। जैसे जैसे कस्टमर अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो IoT के थ्रू, कनेक्टिविटी के थ्रू आप कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप न्यू बिजनेस मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हो। Further is improve business insights and the customer or experience. The speed at which the IoT ecosystem functions allow you to get the real-time data. Again, the real-time data you can get data analytics and the insights that can be used to improve the operations here, the product and the service offerings. Again, the same thing we are talking about here कि customer का experience भी बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, in turn impact the customer experience.